Question 43. A certain compound was known to have a formula which would be represented as ये है given formula. Analysis showed that the compound contained 30.15% carbon and 5.06% hydrogen. When converted to the corresponding thiocyanate का formula ये है. The analysis was 40.412% carbon and 5.94% hydrogen. Find x, y and z. अब एज्यूम कर लेते हैं कि जिस कंपाउंड में ClO4 होल ट्वाइस है उसको मान लेते हैं 1 और जिस कंपाउंड में HCN होल ट्वाइस है उसको मान लेते हैं 2. कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 का जो फर्स्ट पार्ट है PdCx HyNz ये दोनों में सेम है और ये जो सेकंड पार्ट है दैट इज ClO4 होल ट्वाइस और इस वाले कंपाउंड 2 में HCN होल ट्वाइस. सो कंपाउंड 1 और 2 में जो सेकंड पार्ट है दैट इज कंपाउंड 1 में ClO4 होल ट्वाइस है, कंपाउंड 2 में HCN होल ट्वाइस है, यही डिफरेंस है. बाकी जो फर्स्ट पार्ट है वो दोनों ही कंपाउंड में सेम है. और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 को एज्यूम कर लेते हैं m. द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड 1 विल बी इक्वल टू weight of carbon divided by molecular weight of the compound into 100. अब weight of carbon कितना होगा? weight of carbon होगा atomic weight of carbon जो कि given है 12 into number of atoms of carbon in the compound which is x. तो 12 into x divided by m into 100 is equal to 30.15. इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30.15 into m divided by 1200. Similarly, percentage of hydrogen होगा weight of hydrogen in the compound divided by molecular weight of the compound into 100 and this is equal to 5.06. weight of hydrogen होगा atomic weight of hydrogen into number of atoms of hydrogen. atomic weight of hydrogen होता है 1 और number of atoms of hydrogen है y. so 1 into y is y and y by m into 100 is equal to percentage of hydrogen which is equal to 5.06%. इससे y की वैल्यू आ जाएगी 5.06 m divided by 100. Let this be equation 1. अब कंपाउंड 1 जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट हमने अज्यूम किया है m, इसमें से अगर हम weight of ClO4 whole twice को subtract कर दें that is m minus weight of ClO4 whole twice which is equal to 199 और weight of HCN whole twice को add कर दें that is plus 116. 116 is the weight of HCN whole twice. तो हमें molecular weight of compound 2 मिल जाएगा which is equal to m minus 83. अब इस compound में percentage of hydrogen होगा weight of hydrogen divided by molecular weight of the compound 2 that is m minus 83 into 100 and this is equal to 5.94. इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. y will be equal to 5.94 into m minus 83 divided by 100. Let this be equation 2. Equation 1 और equation 2 दोनों से y की वैल्यू मिल रही है. इन दोनों equations को हम equate कर देंगे और solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा value of m which is equal to 560. Now putting the value of m in equation 1 or in equation 2 and solving we get the value of y equal to 28. Putting the value of m in this equation that is x equals to 30.15 m divided by 1200. Putting the value of m equals to 560 here we get the value of x equals to 14. Now for value of z we will add the atomic weights of all the atoms present in this compound 1. Atomic weight of palladium is 106 plus weight of carbon which is equal to 12 into 14. 12 is the atomic weight of carbon and 14 is the value of x plus weight of hydrogen that is 1 into 28. 1 is the atomic weight of hydrogen and 28 is the value of y plus 14 into z. 14 is the atomic weight of nitrogen into z. Z is the number of nitrogen atoms plus 199. 199 is the weight of ClO4 whole twice and this is equal to 560. Solving this the value of z is equals to 4.